everyone, so let's move towards our today's topic, which is what is the development of heart? Before starting this topic, you have to remember that in embryo, the first system which develops is CVS, that is cardiovascular system, is the first system which is the first system which develops in 4th week, and it is the first system of the fetus. Okay, and heartbeat starts at 4th week, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो 3rd वीक में इसकी स्टार्ट हो जाती है. Now as you know that in the 3rd week gastrulation occur, epiblast hypoblast से ectoderm endoderm mesoderm बनते हैं. ectoderm पे primitive streak होती है. ectoderm endoderm mesoderm 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. paraxial mesoderm, lateral plate mesoderm and intermediate mesoderm. paraxial mesoderm obviously as you know somites वगैरह बनाते हैं. intermediate mesoderms वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी बनाते हैं. lateral plate mesoderm will form into 2 layers, splanchnic mesoderm and somatic mesoderm. As you know, splanchnic mesoderm surrounds the umbilical vesicle or yolk sac, and somatic mesoderm surrounds amniotic cavity. Now, from the primitive streak which is present on the ectoderm, the cells from primitive streak migrate towards splanchnic and somatic mesoderm on both sides, and both ends. On the both ends, the lateral plate mesoderm is present. As you know, cranial end and caudal end lateral plate mesoderm मौजूद होती है, जहाँ पर migrate करके आते हैं cell from primitive streak towards mesoderm, lateral mesoderm. Now, in that mesoderm, they will form primary heart field because horseshoe shape का structure बना लेते हैं वो cell. नाउ फर्दर और सेल्स आते हैं जो उसके पास एक क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज सेकेंडरी हार्ट फील्ड. नाउ बोथ एंड यानी क्रेनियल एंड एंड कॉर्डल एंड बोथ एंड्स में ये फील्ड्स बन जाती हैं दोनों. नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होती है फील्ड? इन फील्ड्स में सेल्स मौजूद होते हैं. दो सेल्स दे विल फॉर्म a schedule, they form अब पूरा का पूरा क्या कहेंगे उसको, एक पूरा मेथड बनाते हैं कि क्या किसको कहाँ जाना है. So the primary heart field, the cells of the primary heart field decide that we will go and form what ventricle, that is left ventricle, both atrium and right ventricle, some part of right ventricle. And the second heart field will decide that we will form right ventricle, remaining part of right ventricle, aorta and the pulmonary trunk. Now, both ends having, as you know, both ends, at the both end, cranial end and caudal end, there is a single heart tube. Now, when the folding occur, because as you know, when the folding occur, the heart tube will unite together and they will fuse together to form a single heart tube, and that heart tube looks like, which is present in my notes, the diagram is in my notes. You can see that ऊपर वाला पार्ट ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, देन बल्बस कॉर्डस है, देन वेंट्रिकल है, देन एट्रिया है, देन साइनस विनोसस है. ओके, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस. नाउ जब ये हार्ट ट्यूब बनती है तो सेकेंड हार्ट फील्ड के जो सेल्स हैं वो इस हार्ट ट्यूब के ट्रंकस आर्टेरियोसिस के पार्ट पर और साइनस विनोसिस के पार्ट पर जाकर इसको इलोंगेट करते हैं. ट्रंकस आर्टेरियोसिस आर्टीरियल एंड ऑफ द हार्ट कहलाता है. वाई? बिकॉज यहाँ पर डोर्सल एओर्टा वगैरह बनती है. साइनस विनोसस का जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक तरफ ये दो एक तरीके से हॉर्न निकले हुए, दो पार्ट्स है, दो ब्रांचेज हैं, तो राइट हॉर्न लेफ्ट हॉर्न. सो यहाँ पर विटेलाइन वेन, कार्डिनल वेन एंड अम्बिलिकल वेन आकर ब्लड हार्ट को सप्लाई करती हैं, देन वहाँ से आर्टरीज में जाता है ब्लड. सो द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अभी सिर्फ और सिर्फ एट्रिया भी, मतलब ऐसा नहीं कि एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम अलग अलग, मतलब एट्रिया वेंट्रिकल अलग अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं. एट्रिया में अलग अलग सेपरेशन हुई है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, नो, नेवर. अभी सिर्फ एक ही हार्ट ट्यूब है, एक तरफ से ब्लड फ्लो आ रहा है, साइनस विनोसिस से ब्लड फ्लो आ रहा है और आर्टरी से हार्ट से निकल रहा है ब्लड फ्लो. ठीक है. नाउ
what is the thing is, we will discuss the veins and arteries in the upcoming lectures, but in this lecture we are talking about heart, so we will talk about the heart only. Now, as soon as the single heart tube will form, the mesenchymal cells will form the endoderm of the heart. The splanchnic mesoderm will form the mesoderm of the heart, and the sinus venosus, the epithelial cells of the sinus venosus will cover the whole heart, and that will form epicardium or pericardium. Now, what happens? The atria. Now, atria is below ventricle. Now, as you know, normal heart has atria on the upper side and the ventricle on the below side. So the atria will fold and come on the upper side of the ventricle. Okay, and that diagram is in my notes. You can see the second diagram. Atria मुड़कर, पीछे की तरफ मुड़कर बल्ज फॉर्म करके वो ऊपर आ जाते हैं वेंट्रिकल्स के. नाउ अभी भी एट्रिया और वेंट्रिकल अंदर, मतलब कोई भी सेप्टम फॉर्म नहीं हुआ है अभी सिर्फ ये हो रहा है. ठीक है. Now, what happens, as you know, and you should know, that in the center of the heart, there is a cushion, there is a cell, there is a cluster of cell, that is AV cushion, AV or atrioventricular cushion. Now, this is the point where AV node is present, and this point is also known as crux point, where all the septum are meeting, but no septum right now is formed. So we are only seeing the cushion, the cluster of the cell in the heart. Now, what happens? Septum will form. How the septum will form? Before septum, the atrioventricular septum will form. Now, the atria, the separation of atria, the point where atria and in the single heart tube, the point where atria and ventricle are separating, there will be a swelling in the covering, which causes the flow, which causes the tube to be closed. Okay, and will fuse with the AV cushion. Therefore, as soon as they fuse with the AV cushion, the atria and the ventricle will be separated. Okay. Now, how the atrial septum will form? How the ventricular septum will form? Now, how the atrial septum form? As you know, atrial septum. Oh, sorry. One more thing. When the folding of the heart tube will occur, the sinus venosus will enter into the right atrium, and the truncus arteriosus will arise from the left ventricle. Remember this point. Now, what the point is? Atrial septum. Now, atrial septum. The atrial septum will form. How the atrial septum will form? The septum primum. Before septum primum will arise, as you can see in my first diagram of the septum, that the septum primum will arise, and before fusing with the AV cushion, it stops. Okay, and it leaves the space, and that space is called as foramen primum. So that heart or blood will can flow from right atrium to left atrium. But few days or few hours, there will be some pores appearing on the septum primum. Primum means primary. Primary से निकला है, पहले बनने वाले. तो septum primum पहले बनेगा, foramen primum बनाएगा. Foramen primum, that is a space, and then there will be a degeneration in the septum primum. Now, as soon as it feels कि मेरे ऊपर तो degeneration हो रही है, मैं तो degenerate होने वाला हूँ, so that will close the foramen primum and fuse with the AV cushion. Now, another septum will form, because वो तो degenerate हो रहा है आहिस्ता, blood flow तो रुक ही नहीं रहा right atrium से right ventricle. So another septum will form, and that septum is called as septum secundum. That will form, and from the AV cushion the cell will elongate. अच्छा, ये septum कैसे form होते हैं? जो cells होते हैं walls के, वही elongate हो रहे होते हैं, progenerate हो रहे होते हैं, divide हो रहे होते हैं, and that will cause.
तो AV क्वेश्चन से सेल्स दैट इज डिवाइड हो रहे होते हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं, इलोंगेट हो रहे होते हैं, और वो जो सेप्टम सेकेंडम है, एज यू कैन सी इन माई सेकेंड डायग्राम, सेप्टम सेकेंडम के पास जाकर रुक जाते, फ्यूज नहीं होते, फ्यूज बिल्कुल नहीं होते. नाउ व्हाट हैपेंस, एज you can see, this can't be explained, this cannot be explained in the recording or in audio or in video. This can only see in the diagram. You can only see in the diagram that which is in my notes, that the blood flow is from right atrium to left atrium. How कि वो थोड़ी सी जो स्पेस है उस तरह जो राइट एट्रियम से ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है. ओके, थोड़ा सा ब्लड फ्लो हो रहा है. नाउ वेंट्रिकुलर सेप्टम कैसे फॉर्म होते हैं ये भी आपको बता देते हैं. देन आवर टुडेज टॉपिक विल बी एंड, और फिर वेन्स और आर्टरीज की बात करेंगे. हाउ द वेंट्रिकुलर सेप्टम विल फॉर्म, फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट द वेंट्रिकुलर सेल्स विल elongate and they will elongate in a thick layer, and before fusing with the AV cushion they will form a foramen. They will leave a space, and that foramen is called as that will form that in that foramen there will be membranous septum. As you know, interventricular septum has two parts, membranous septum and muscular septum. तो muscular septum ventricles की wall से cells आ जाएंगे, और जो membranous cells हैं, अच्छा मस्कुलर जो सेप्टम है ना वो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म कर देगा. जो मेम्ब्रेनस सेप्टम है दैट विल फॉर्म फ्रॉम दैट AV cushion cells, and they will elongate and fuse with the muscular septum, and that will lead to that will form right ventricle and left ventricle. So guys, take care of yourself and study hard, work hard, and good luck. Bye.